और साथ में ऐसे मिक्स प्लेट, ठीक है। तो इन सबको, रुको एक मिनट, इन सबको इस बोल में भिगो के रखने बोला, और फिर उसको चम्मच से क्रंच करने बोला। तो चम्मच से बोला था या हाथ से बोला था मुझे नहीं पता, तो मैं चम्मच से ही करूंगी। मेरे पास प्लास्टिक का चम्मच नहीं है तो यही वाला लिया। तो इधर मैंने क्या क्या लिया वो आप लोगों को बोल देती हूँ। वैसे उन्होंने बोला था कि आपके पास जो जो आइटम है वही लेना। तो आइटम तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी मैनेज होना पड़ेगा कि इतना ज्यादा अगर लूँ तो मैं कब कंप्लीट करूंगी। तो पहले मैं लूंगी, लिया एक किटकैट, देखो मिनी किटकैट, एक मिनी किटकैट। तो इसको मैं इधर भिगो देती हूँ। फिर 4 क्यूब्स, इसको भी ट्रायंगल, हार्ड है बहुत, पता नहीं पानी। फिर ग्रुप्स, पंजाब की बिस्किट, पानी और चाहिए होगा। फिर फुल रोस्टेड नकुमत, क्ले पॉट्स, तो मैंने इतना ही लिया। और इधर मैंने स्लेट पेंसिल का पानी लिया, पानी बोलूंगी, पेस्ट लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्ले पॉट से स्टार्ट करते हैं। मैं काम करती हूँ, व्हाइट खड़ी भी लेके आती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट, थोड़ा सा व्हाइट खड़ी और थोड़ा स्लेट पेंसिल भी लेके आई।
तो डन।
बहुत सारा पेस्ट्री है, रेड पेस्ट्री है, इसीलिए साइड सॉफ्ट हो गया है ना, साउंड तो इतना नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं है, रिक्वेस्ट किया तो पूरा करना पड़ेगा ना। चलो अब स्टार्ट होगी। वाओ क्या मजा है, बहुत सारा रेड पेस्ट, बहुत सारा। इतना देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने पूरा ही नहीं कर पा रही थी। ये देखिए, ओके चलो अब क्रंच करती हूँ। ये बहुत सारा गया। imagine मुझे लगा था बहुत सारा है टेस्टी और सिलेक्ट पेंसिल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर लंबा नहीं हुआ, जल्दी जल्दी फिनिश हो गया, इतना जल्दी खत्म हो गया ना। मजा तो आया, बहुत मजा आया मुझे क्रंच करके, और बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो कोई नहीं, रिक्वेस्ट है, मैंने पूरा कर दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय बाय। वैट ही करो, ऐसे वैट ही करो। अगर वैट करती तो मैं इसको ऐसे कुकीज के साथ जैसे मैं उठा नहीं पाती, समझ सकते हो बात को। तो इसीलिए मुझे लगा था कि इसको मैं ड्राई कर लूंगी, फिर ऐसे अच्छे से मस्त वाला कुकीज के जैसा हो गया। देखो तो इधर बहुत कुछ है, मैं बोल देती हूँ। फुल रोस्टेड नकुमत, बटर ग्रे, ब्लैक स्लेट, हाफ रोस्टेड नकुमत, स्लेट, क्ले पॉट, और ये था ड्राई फ्रूट, ये पंजाब की मिट्टी, ये भी पंजाब की मिट्टी, फुल रोस्टेड मुल्तानी, रेड स्लेट, और ये था फॉरेन क्ले, और ये वाला है रेड टेराकोटा।
सब कुछ इधर लिया मैंने, पानी लिया क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये ड्राई होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप लोगों से शेयर करना था, शायद 2-3 दिन बाद मेरे कुछ दिन 2-3 दिन तक मैं वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ। तो मैं सही हूँ, सब कुछ सही है, कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों से बोला था कि करने को योग आने वाला है, जिसके कारण हो सकता है कि वीडियो ना बना पाऊँ। तो आप लोग मतलब टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ, सही हूँ। अगर जितने भी आप लोग ना हो, आप लोग मेरा और वीडियो देखना, अगर आप लोग हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोल्डिंग पे हमको किस वजह से हो रहा है ना।
तो डन। एक बात बोलती हूँ, ऊपर का जितना भी क्रम्बल्स था उसके बारे में तो छोड़ो, लेकिन जो नीचे का पेस्ट बनाया था मैंने, व्हाइट पेस्ट और रेड पेस्ट, व्हाइट पेस्ट क्या अर्डीनेस था। मतलब ये व्हाइट जो पाउडर से मैंने पेस्ट बनाया वो सैयद सारा वाला वो पाउडर नहीं है। मैंने उस दिन सेल किया था ना, इतना सारा ब्रोकन निकला, तो वो सब मैं पाउडर बना लूंगी, उसी का है। इतना ज्यादा अर्डी यार पूछो मत। मतलब पाउडर हो रहा था, पानी की जरूरत पड़ रहा था, रेड में भी पड़ रहा था और व्हाइट में भी पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा पाउडर है। और एक बात, मैं पानी ना भी लूँ सपोज, क्योंकि दिक्कत नहीं हो रही थी, पानी ना भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसको चबाते पेस्ट बनने तक रुकते ना खत्म हो जाता, वीडियो वही बोरिंग हो जाता इसलिए। और पानी लेने से क्या होता है, मैं बहुत सारे फ्रेंडों को मैं बोलना चाहती हूँ, एक प्लेट हम खा रहे ना, कुछ भी खा रहे, उसमें से थोड़ा सा नॉर्मली ड्राई क्रंच करने के बाद जब थोड़ा सा हम लोग पानी लेते हैं रिव्यू के टाइम पे, पानी लेने के बाद उसका अर्डीनेस और भी ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल का हो जाता है, समझ लो ना। क्योंकि पानी लेने के बाद हर एक चीज मुंह के अंदर खुल जाता है, फिर अच्छे से स्वाद उसका मिलता है कि कैसा है, कैसा अर्डीनेस है, जो कितना टेस्टी है, वो उसी के बाद ही पता चलता है, पानी के बाद ही पता चलता है। बाकी देखा, गर्मी का मौसम आ गया, मेरा पसीना चालू हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गया है फिलहाल 2 दिन से, बहुत ज्यादा। रात को कुछ भी ब्लैंकेट वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा गर्मी है। और एक बात आप लोगों से मुझे बोलना था, बहुत सारे फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे नहीं, कुछ फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट करते हैं पाउडर खाओ, मतलब स्लेट का पाउडर खाओ, नमक का पाउडर खाओ, या क्रंच करो बोलते हो, वो तो क्रंच नहीं होगा, क्रंची चीजें क्रंच करने का ही क्रंच बोला जाता है। मैं उन लोगों को यही बात बोलना चाहती हूँ, साउंड जिसमें नहीं होता है ना, मुझे 0% भी मजा नहीं आता है, और जिस चीज में मुझे मजा नहीं आता है वो वीडियो करके मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा पाती हूँ, समझ लो ना। मेरा वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को मेरा मुंह देख के पता चलना चाहिए कि मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बिना साउंड वाले वीडियो का मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं करता, इसलिए मैं पाउडर में क्रंच नहीं करती। तो हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, एक कटोरी में पाउडर ले सकती हूँ, एक साइड में थोड़ा सा दूसरा भी कुछ क्रंची वाला आइटम लेके फिर ऐसे कर सकती हूँ। नॉर्मल ऐसे पाउडर ही कैसे क्या करूँ बोलो, कोई बात है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।